Good morning everyone. I am teacher Rashdeep from Greenhouse. Today I am going to telling a beautiful story. My story name is A Wishful Fish. Once upon a time, in a pond there lived many fishes. They swam, played and splashed joyfully. But one day something strange happened. The people started throwing garbage in their home. One fish called Bluey found something tied around its tail. Oh no, it's a string. The people have started polluting the water. It is very hard to live here now. It looked up the sky. Wow, it is so beautiful. Then it closed its eyes to wish the god. Oh God, why you don't make me a bird? Being a bird is very nice. If I get a new life, so please make me a bird. That night something magical happened. The next morning, Bluey turned into a bird. It noticed that people are cutting down the trees. Soon after, it got lost its home and searching for a new place to live. Then again it noticed that smoke is coming from the factories and the vehicles. Bluey was very sad and said, being a bird is also not very easy. It is very hard. The people have started polluting the air too. Then it looked down the animals roaming on the streets. It again closed its eyes to wish the god. Oh God, why you don't make me a land animal? Being a land animal is such very easy. Please make me a land animal if I get a new life. That night something magical happened. The next morning, Bluey turned into a cow. Moo, moo, moo. It was running on the streets. After some time, Bluey was very hungry. Now I can eat some small fresh grass. Bluey looked down the grass to eat, but saw only garbage on the streets. Bluey was very sad and said, the people have started polluting the land too. Being a land animal is also not very easy. It is very hard. A voice came and it was caught. Dear Bluey, it's not just making a wish. Show them the nature's beauty and they protect it. Now, the moral of the story is that it is everyone's duty to keep their surrounding clean and beautiful. Thank you. Hi friends, I am teacher Hanimrat from Yellow House. Today I am going to tell amazing story with good moral. Let me start. The name of the story is Tootie and the Sparrow. There were two trees near a river. A small sparrow was passing by that way. She asked the first tree, Dear tree, it is going to rain heavily, so can I make nest on your branches for me and my babies? The first tree didn't allow the sparrow, and the sparrow flew away. She went to other tree and asked same question to that tree also. The second tree agreed and allowed the sparrow to make nest on its branches. Another day it is going to rain heavily. The first tree broke from its root and fell down with rain. When the sparrow saw, she went and said to the first tree, that is your punishment for rejecting me to build nest on your branches and your rude behavior. But the tree smiled and replied softly, Dear, I already knew my roots were very big and we were not able to stand in such heavy rain. I don't take risk for you and your youngest one. Sorry, I didn't allow you to make nest on my branches. And the sparrow felt sorry for that tree. The moral of the story is don't judge a book
सुप्रभात। मैं डॉक्टर एंजल नीले हाउस की छात्र, मैं आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे कहानी का शीर्षक है ईमानदार लकड़हारा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन मेहनती और संतोषी था। रोज सुबह वह पास के जंगल में पेड़ काटकर लकड़ियाँ इकट्ठा करता, फिर उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर अपने और अपने परिवार के लिए भोजन का प्रबंध करता। हमेशा की तरह वह पास के जंगल में बहुत गहरी नदी बह रही थी। उसने सोचा, मैं इस बड़े पेड़ को काट लेता हूँ। जैसे ही वह पहला हाल करने लगा, अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह डर गया, घबरा गया। वह जोर जोर से रोने लगा। तभी देवी माँ जल से प्रकट हुई, बोली, हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? लकड़हारा हाथ जोड़कर बोला, देवी माँ, मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है। वह मेरे लिए बहुत कीमती थी। अब मैं क्या करूं? मैं उससे अपनी रोटी कमाता था। फिर देवी माँ उसकी चिंता देखकर बहुत दुखी हुई। फिर वह नीचे गई और सोने की कुल्हाड़ी लेकर ऊपर आई। बोली, क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? लकड़हारा बोला, नहीं देवी माँ, ये नहीं है मेरी कुल्हाड़ी। फिर से देवी माँ नीचे गई और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर ऊपर आई। बोली, क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? लकड़हारा बोला, नहीं देवी माँ, ये भी नहीं है मेरी कुल्हाड़ी। मेरी कुल्हाड़ी तो बहुत मामूली सी और लोहे की है। फिर से देवी माँ नदी के नीचे गई और लोहे की कुल्हाड़ी लेकर ऊपर आई। बोली, क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? लकड़हारा बोला, हाँ देवी माँ, ये है मेरी कुल्हाड़ी। वह अपनी कुल्हाड़ी देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। देवी माँ उसकी प्रसन्नता देखकर बहुत खुश हुई और उसको तीनों लकड़ियाँ रखने को दे दी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। धन्यवाद। Hello everyone, my name is interior designer Jasmeet Kaur. I am from Red House. Today I tell a story. My story name is Tara and the Talking Plant. Once in a small village, there lived a kind-hearted girl named Tara. She loved nature and spent hours talking with flowers. But everybody laughed at her and said, plants do not talk, Tara. Plants do not talk, Tara. But she didn't mind. She believed that feelings that are just for people. One day her father fell seriously ill. Doctors came and went, but no medicine worked. Tara sat quietly near her garden, tears rolling down her cheek. Suddenly she heard a soft whisper, do not cry, Tara. Do not cry, Tara. Started looking around her favorite plant, Tulsi, growing gently. The sound whispered again, take my leaves and make a tea for your father. Nature heals with love. Without wasting time, Tara followed the plant advice and gave her father the herbal tea. Miraculously, her father started feeling better. Doctor was amazed. This is a miracle. Day by day, he recovered. From that day, everyone in the village started taking care of plants, make garden, and never laugh at Tara again. Moral of the story: nature listens if we love, respect it. It will care us. Thank you and have a nice day. सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर जैस्मीन नीले हाउस की छात्रा आज आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उसका नाम है एक बोलने वाला पेड़। बहुत समय पहले एक गांव में अमन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत जिज्ञासु और मददगार था।
लेकिन लोग उसकी बातों पर ज़्यादा गंभीरता नहीं देते थे। एक दिन वह जंगल में लकड़ियाँ काटने गया। लकड़ियाँ काटते काटते उसे एक आवाज़ सुनाई दी, अमन अमन यहाँ नीचे देखो। वह डर गया। उसने कहा, कौन है? मैं एक पेड़ हूँ। मैं एक साधारण पेड़ नहीं, एक बोलने वाला पेड़ हूँ। अमन ने देखा एक पुराना बड़ा पेड़ जिसकी शाखाएं चमक रही थी। पेड़ ने कहा, मैं हर 100 साल बाद किसी सच्चे दिल वाले इंसान के साथ बात करता हूँ। मैं तुम्हारी एक परीक्षा लूँगा। अगर तुम उसके अंदर पास हो गए तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। अमन ने कहा, मैं तैयार हूँ। जंगल में एक बूढ़ा आदमी गिरा पड़ा था। अमन ने देखा उसके पास एक सोने का थैला है। अब वह सोच में पड़ गया कि वह चुपचाप सोने का थैला ले ले या फिर उस बूढ़े आदमी की मदद करे। उसने बूढ़े आदमी की मदद की। बूढ़े आदमी ने कहा, तुमने मेरी मदद की, धन्यवाद। पेड़ ने धीरे से कहा, अमन पहली परीक्षा पास। अब बारी थी दूसरी परीक्षा की। अगले दिन जब अमन जंगल से जा रहा था तो उसे एक भालू मिला। वह डर गया पर भागा नहीं। उसने झाड़ियों में पड़ा, ढोल उठाया और जोर जोर से बजाने लग गया। ढोल की आवाज़ सुनकर भालू भाग गया। पेड़ ने कहा, बहादुरी के लिए सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग भी चाहिए होता है। तुमने ये भी पास कर लिया। अब बारी थी तीसरी परीक्षा की। पेड़ ने कहा, मैं तुम्हारी कोई 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, सोचो और मांगो। अमन ने सोचा और मांगा कि मेरे गांव में कोई भी कभी भी भूखा ना रहे, मेरे माता पिता हर वक्त स्वस्थ रहें। अगर कोई मेरे पास मदद मांगने आए तो मैं कभी भी उसे ना करूं। पेड़ ने कहा, तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, पर जो तुमने मांगा वो तुम्हें अमीर बना देगा, दिल से। अमन ने देखा एक चमकती रोशनी पेड़ की शाखाओं में से निकली, जिससे उसकी आंखें चमक उठी। धीरे धीरे उसके गांव में खुशहाली बढ़ी और लोग उसकी बातों पर विश्वास करने लगे। लेकिन वह पेड़ के बारे में किसी को नहीं बताता था। आज भी लोग कहते हैं, अगर इंसान दिल से सच्चा हो तो पेड़ भी बोल उठते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, सच्चाई, साहस और निष्ठुरता है असली जादू। धन्यवाद। सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों, मैं IPS ऑफिसर सरगुन लाल हाउस की छात्र हूँ। आज मैं आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाने आई हूँ, मेरी अपनी कहानी। मेरा नाम है बूंद। हाँ, मैं एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी पानी की बूंद हूँ। एक दिन बादलों की रानी ने मुझसे कहा, बेटी अब तुम धरती पर जाओ, वहाँ पेड़ पौधे पत्ते और बीज तुम्हारी मदद का इंतज़ार कर रहे हैं। सभी बूंदें डर गई, लेकिन मैंने हिम्मत दिखाई और बोली, माँ मैं जाऊँगी, मैं किसी का भला ज़रूर करूँगी। फिर क्या था, मैं हवा के साथ उड़ती हुई धरती पर आ गई। सबसे पहले एक मैं सूखे पत्ते पर गिरी। पत्ता बोला, अरे मेरी प्यास बुझ गई, धन्यवाद बूंद बहन। मैं मुस्कुराई और आगे बढ़ी। फिर मैं मिट्टी में समा गई। वहाँ मुझे एक छोटा सा बीज मिला। मैंने कहा, बीज भैया उठो, अब तुम्हारा समय आ गया है। बीज ने बोला, तुमने मुझे जीवन दिया, अब मैं एक हरा भरा पौधा बनूंगा। कुछ ही समय बाद वह पौधा एक हरा भरा पेड़ बन गया, फल, छाया और हवा देने वाला पेड़। और मैं तो मिट्टी में ही रह गई, लेकिन बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने कुछ अच्छा काम किया। तो सीख क्या है दोस्तों, एक छोटी सी बूंद भी बड़ा बदलाव ला सकती है। इसीलिए पेड़ लगाओ, पानी बचाओ और प्रकृति से दोस्ती निभाओ। धन्यवाद। Greetings to all.
I am the happy prince. My name is Dilraj Singh. My house is yellow. I read in 5th B class in Darshan Academy. Today I am going to tell a story. Its name is The Happy Prince. Hello children, I am the Happy Prince. Once I lived in a big palace. I had everything: fun, games, beautiful clothes. I never saw poor or sad people outside. But now I stand high above the city as a statue. My body is covered in gold. My eyes are made of shiny fires. I have a red ruby on my sword. From here, I can see everything. Sad people, hungry mothers. My heart feels heavy. I want to help them. One day, a little swallow came to rest at my feet. I asked him to help me. I told him to take the ruby from my sword to a poor woman. I gave my eyes one by one. He flew here and there, helping others. Slowly, I lost all my gold and looked dull. But I felt happy. People thought I was no more beautiful. They took my statue down. But God see our kindness and took us to heaven. You see, real beauty is not outside, it is in your heart. Helping others is the true kindness. Thank you. Hello everyone, I am Dr. Gurneekar from Red House. Today I am going to tell you a story that is very close to my heart. It's called The Forest That Forgot to Smile. Once upon a time, in a quiet valley, there was a beautiful forest named Green Shade. Oh, it was the happiest forest ever. The birds sang sweet songs, the flowers smiled in the sunshine, the trees stood tall and proud, and even the little brooks giggled as they flowed. It felt like the forest itself was smiling. But one day, the thing began to change. People from nearby cities started visiting the forest. At first, they just picked few flowers and threw wrapper here and there. And they cutting down the trees, big and strong trees, just to build more houses and shops. The chirping bird flew away. The stream get dried up. The air become dusty. On a half-cut branch sat a tiny sparrow named Chippy, who looked around and whispered, "Where will we go now?" The oldest banyan tree, over 300 years old, sighed. "Our home is disappearing. Now, let me tell you about a girl named Riva. That's me. One morning, I visited Green Shade with my father. My grandmother has told me many magical stories about this forest. But when I read there, I saw dry trees, plastic bags, and silence. I asked, "Papa, what happened to the happy forest?" He looked down and said sadly, "We forgot to take care of it." That night, I could not sleep. I made a promise. The next day, I returned with my friends. We watered the trees, we cleaned up the wrappers, we made some signs that said, "Please do not litter. Nature is not a dustbin. Trees are our best friends." The I
The birds came back. Stream started gurgle again. The banyan tree swayed in joy, not with a smile, but with the dancing leaves. Birds came back. Stream started gurgle again. The banyan tree swayed in joy, not with a smile, but with dancing leaves. Or that the next one bright morning, the chippy the sparrow returned and chirped, "Thank you, thank you." Then that day I looked around. I see the forest was smiling again. All because one child cared enough to act. Moral: nature is our best friend, but when if we befriend it first. Thank you. सुप्रभात दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर तन्वी। मैं हूँ हरे रंग की छात्र। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है काला कौवा। एक बहुत बड़ा जंगल था, उसमें कालू नाम का कौवा रहता था। वह रात की तरह काला था। वह अपने रंग को लेकर बहुत दुखी और परेशान था। एक दिन वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तभी वहाँ से एक साधु महाराज जा रहे थे। महाराज ने उसको रोते देख पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? कौवा बोला, महाराज मुझे यह रंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो महाराज ने पूछा, तो तुम क्या बनना चाहते हो? कौवा बोला, महाराज मैं हंस बनना पसंद करूँगा। महाराज बोले, ठीक है जा, मैं तुझे हंस बना दूंगा, लेकिन पहले हंस से मिलकर आ। फिर वह उड़ता उड़ता हंस के पास गया। बोला, हंस भाई, भगवान ने तुझे कितना सुंदर बनाया है, तो कितना मस्त रहता है। हंस बोला, कहाँ, मरे लोगों के लिए रंग है ये, मेरी ज़िंदगी में तो कोई रंग ही नहीं है। फिर वह दोनों उड़ते उड़ते महाराज के पास गए। महाराज ने हंस से पूछा, तू क्या बनना चाहता है? हंस बोला, महाराज मैं तोता बनना पसंद करूँगा। महाराज बोले, ठीक है जा, मैं तुझे तोता बना दूंगा, लेकिन पहले तोते से मिलकर आ। फिर वह दोनों उड़ते उड़ते तोते को ढूंढने लगे। पेड़ के 4 चक्कर लगाने के बाद कहीं ना तोता मिला। बोले, तोते भाई, भगवान ने तुझे कितना सुंदर बनाया है, तो कितना मस्त रहता है। तोता बोला, कहाँ, पेड़ों जैसा तो मेरा रंग है, हरे में हरा मिल जाता है, पेड़ के 4 चक्कर लगाने के बाद कहीं मैं मिला हूँ। फिर वह तीनों उड़ते उड़ते महाराज के पास गए। महाराज ने तोते से पूछा, तू क्या बनना चाहता है? तोता बोला, महाराज मैं मोर बनना पसंद करूँगा। महाराज बोले, ठीक है जा, मैं तुझे मोर बना दूँगा, लेकिन पहले मोर से मिलकर आ। फिर वह तीनों उड़ते उड़ते मोर के पास गए। बोले, मोर भाई, भगवान ने तुझे कितना सुंदर बनाया, तो कितना मस्त रहता है। मोर बोला, कहाँ ये जो तुम आवाज़ सुने ना, टप 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 की? तो कौवे ने पूछा, ये किसकी आवाज़ है? मोर बोला, ये शिकारियों की पैरों की आवाज़ है, ये आकर मेरा शिकार कर मेरे पंख निकाल कर बेच देंगे। तो फिर मोर बोला, कौवे मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। तो कौवे ने पूछा, क्यों? तो मोर बोला, खुली ज़िंदगी है, सुंदर रंग है, तेरे को तो खाने पीने को भी मिल जाता है। फिर कौवे के मन में आया, हमें जो भी मिला हमें उसी में खुश रहना चाहिए। धन्यवाद। Good morning, my dear teachers and my friend. I am Dr. Disha Thakur from Greenhouse. I'm going to telling a beautiful story. The title of my story is The Ugly Tree. Once upon a time in a large forest, there lived many different trees such as mango, banyan, neem, teak, oak, etc. Among them there was one tree which had crooked trunk. It looked very ugly compared to other trees. Other trees used to tease him. Oh no, you are such an ugly tree. Oh no, you are such an ugly tree. No,
poor tree was so sad, and he always thought, "Oh God, why did you make me so ugly? Why am I not beautiful like other trees?" One day, a woodcutter came to the forest, and he saw and said, "This crooked tree is no use to me. Cut out the other state of tree." And he cut out the other state of tree, except the crooked tree said, on seeing this crooked tree said, "Thank God, my ugliness saved in my life." We should never blame God. Trouble God had a reason for everything. Moral of the story is never blame God. There is always a reason behind his deed. Thank you and have a nice day. Hello everyone, I am Wing Commander Pridhi from 4th A class of Yellow House. Today I am going to tell you a story. The title of the story is The Necklace. Hello, my name is Matilda. I always wanted to be rich and wear beautiful clothes and jewelry, but I was not rich. I was married to a kind man who worked in an office. One day, my husband got an invitation to a big party. I was excited but also sad. I didn't have anything nice to wear at the party, so we bought a pretty dress. But now the problem was I had no jewel to wear. I was very upset. Later, an idea struck my mind and thought, what if my old rich friend can help me? I went to her house and shared my problem. Very generously, she opened all her jewelry box in front of me. I borrowed a shiny diamond necklace. At the party, everybody looked at me. I felt like a queen. People praised me. They talked about me. I was on cloud 9. When we came back home, the necklace was gone. I was so scared. I searched it everywhere. At home, on roads, in the party hall, but sadly I didn't find it. I was so ashamed and scared that I didn't tell my friend. Instead, we bought a new diamond necklace just like that one. It cost a lot of money. We worked for 10 years to pay for it. After 10 years, I met my friend and told her the whole story of losing her diamond necklace. Do you know what she did? Ha ha ha. She laughed at me and said the necklace was fake. It was not real diamonds. I felt so sad. We worked for so many years just for that fake necklace. Oh no! Now I have learned, always tell the truth and don't try to look rich if you are not. Be happy with what you have. Thank you. सुप्रभात, मेरा नाम प्रभनी कौर है। मैं नीले चरण से हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है एक घमंडी मोर और एक बुद्धिमान सारस। ध्यान से सुनिएगा। एक घमंडी मोर था जो अपनी सुंदरता का बखान करता रहता था। कहता, ज़रा मेरी पूंछ तो देखो कितनी सुंदर है,
ज़रा मेरे पंख तो देखो कितने मनमोहक है। वे नदी किनारे जाता और अपनी परछाई देखकर कहता, मैं तो मोर हूँ मोर, मेरी सुंदरता के आगे न टिक पाया कोई और। एक दिन नदी किनारे एक सारस आता। मोर उसको देखकर मुंह फेर लेता। मोर कहता, तुम कितने रंगीन सीधे साधे हो। सारस ने शांति से जवाब दिया, सुंदरता केवल बाहरी नहीं होती मित्र, सुंदरता तो दिल में होने जरूरी है। ऐसा कहकर वे उड़ गया। कुछ दिनों बाद जंगल में भयंकर आग लग गई। सभी जानवर इधर उधर दौड़ने लगे। मोर भी उनकी तरह तेजी से उड़ना चाहता था, पर उसके भारी पंख उसके उड़ने में सहायता नहीं कर रहे थे। तभी सारस ने अपनी लंबी चोंच से मोर को पकड़ा और ऊंचे आसमान में उड़ा ले गया। सारस ने उसको एक नदी किनारे छोड़ा और उसकी जान बचाई। मोर की आंखों में आंसू आ गए। मोर ने उससे माफ़ी मांगी। तभी सारस ने मुस्कुराकर मोर से दोस्ती कर ली और उनकी दोस्ती जंगल में मिसाल बन गई। शिक्षा, सुंदरता बाहरी नहीं, सुंदरता तो दिल में होनी ज़रूरी है। कमेंट करना बुरी बात है।